Hello everyone, my name is Manya and today I am here to talk about Shruti ma'am, since I was not someone you can see today, a confident girl, until I met her, because I was dealing with a lot of complexities with my life, bad relationships, and I was completely in a negative zone, in a dig, and I did not know how to come out of that zone. I was going back and forth. I was completely shattered. I thought this was the end of my life. And then one fine day, I met her and opted her course, wherein I felt so relaxed. I must say, I earlier have done, you know, counseling sessions with other doctors, but the kind of commitment, love, compassion she showed me I have never seen before. She was there with me entire 21 days. Each day she used to, ask me as to how I was feeling, and it was like a hand holding process. कई बार ज़िंदगी में ऐसे होता है कि हमें लगता है कि ज़िंदगी बस ख़त्म हो गई है। यकीन मानिए ईश्वर खुद आपके पास चल कर नहीं आते, बट वो ज़रूर किसी को भेजते हैं एंजल के रूप में। मेरे केस में वो श्रुति मैम थी। उन्होंने न सिर्फ मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस नेगेटिव जोन से निकाला, बल्कि उनसे मिलने के बाद आई कैन सी अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ. I did not know about self discovery, and I learned from her. I did not know about setting boundaries, and I learned from her. And आज मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत आँखों से देख सकती हूँ. आँखें तो मेरे पास पहले भी थी, पर वो रोशनी जो उन्होंने मुझे दी है, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ. और मैं चाहती हूँ हर वो औरत या फिर कोई मेल जो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा हो, जो किसी लूप में फंसा हुआ हो अपने थॉट्स की, और उन्हें लगता हो कि ज़िंदगी बस यही है, तो लेट मी टेल यू, ज़िंदगी यही नहीं है. ईश्वर ने हमें ज़िंदगी जीने के लिए दी है, और बहुत ज़रूरी है कि जब हम इस तरीके की सिचुएशन में हो तो हम एक इनिशिएटिव लें और हम प्रोफेशनल हेल्प लें, क्योंकि हमारे सोसाइटी में प्रोफेशनल हेल्प लेने को एक स्टिग्मा, काउंसलिंग को एक स्टिग्मा की तरह देखा जाता है. तो आप अगर ऐसे किसी अवस्था में हैं तो प्लीज़ you can talk to Dr. Shruti. She will be the best person to approach to. She'll give you the techniques, the tips, the remedies to fight with your own thoughts. मैं अपने आप को स्पिरिचुअली ज़्यादा कनेक्टेड